सर मुझे ये पूछना है कि जो शेड्यूल डाला गया था ब्रोशर में वो ऑफलाइन भी होगा आगे? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से वैसे तो सब लोग अवेयर होंगे, बट आई विल रिपीट दैट दिस FDP इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड आल्सो। पहला जो सप्ताह है वो ऑनलाइन है, नेक्स्ट वीक के जो 5 दिन है वो ऑफलाइन होगा डीक्रस्ट मुरथल में। आप यही पूछना चाह रहे थे सोनिया जी? सर एक्चुअली हमारे को प्रॉब्लम ये हमारे प्रिंसिपल अलाउ नहीं करेंगे। हम्म। तो फिर हम लोग हमारा बीच में रह जाएगा कोर्स। हाँ, वो आप ऐसे कीजिएगा, एक बार जो कोऑर्डिनेटर है ना प्रोग्राम के, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। मींस कि जो नेक्स्ट वीक होगा ऑफलाइन उसमें कहीं पर भी ऑनलाइन के लिए स्कोप नहीं होगा? हाँ नहीं, देखिए वो उन्होंने क्या किया है, ये हाइब्रिड मोड में हो रहा है। जी पहला जो सप्ताह है, जस्ट ए मिनट, एक कॉल आ रही है अर्जेंट। जी 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 प्लीज। Good सो वेल, evening. राजीव जी इज विद अस। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, ही वाज हैविंग सम नेटवर्क इशू। सो वेलकम राजीव जी, वेरी वार्म वेलकम। Is my audio clear or is it breaking up? या a little It's bit clear, your right? voice is breaking. Sorry? Your voice is breaking in between. Oh, okay. So I am hoping that it will be a good network because I am in Bhopal and I thought the network Wi-Fi was there, but in one of the colleges that I'm staying, there is no Wi-Fi. The only option is to connect through my mobile. So is it clear now? Is the audio clear? Yeah, it is clear, more than 90%. Okay, if it is not, please tell me so that as and when I can correct it or say, Clear, sir, no I problem. will do that. Sure. Okay, so okay. So how's everybody doing? कैसे हो सब लोग? Fine, sir. Good, sir. Good. Thank you. Fine, What sir. about you, sir? Very well. I'm doing good. I had to come for a concluding session of an FDP to Bhopal today. So that is in one of the universities. So I had to be here today. That's why I'm here. It was not in a part of my plan, but sometimes it happens. Yeah. So you have any questions from whatever we have done so far? Any questions, anybody? No, sir. Okay. So if we can recap on some of the things that we learned, so yesterday we spoke about, or yesterday or before that, we spoke about how we have a waking state, a dreaming state, and a sleep state, right? If you look at the waking state, in the waking state, everything is dominated by the senses. The senses dominate us. Whether it is sight, smell, touch, hearing, sound, taste, the senses dominate this world. And what happened when we experience the senses? What happens? Or what do we want from the experience of the senses? What are we expecting from these senses, from the outside world? Sir, existence of anything, sir. Okay, what else? What else?
So What give are us we the expecting? outcome. To give us the outcome, which means you are expecting a sense of joy or elation Yes. from the outward world of these five senses. Yes. You know, but if you look at it, our mind is and our self is much bigger than these senses, right? Yeah. So the senses, and if you look at it, the senses are more powerful than the object of the senses. The sense itself is more powerful than the ears, than the eyes, because there is an element of mind involved, isn't it? So even if you want a even if you have a relationship which is based on these five senses, you are looking for something much bigger than that. Yeah. So now we will see a short video. This was an interesting video. Not all aspects of it are connected with consciousness, but many of the questions are very relevant with consciousness. So I thought you should see this video. Am I breaking up? Because this video is unstable. So I put on the video, I'll switch off my video so that at least the network connectivity is good. So I'll just switch it on right now, and then if it is breaking up, you let me know. One second. Because can you hear me now? Okay, I'm sharing the screen. Tell me that it is perfect. Can you see the video? No, sir. Not yet. No, sir, no. Your screen share is loading. Okay. Your internet connection is unstable. Okay, 1 second, give me. Has it got loaded? The video has not yet started. Can you hear? Thing is permanent. Everything changes. What did Vinod Not say? affected by time. Accepting. What aspects of the illusion can help us become free and not more bound? I'll tell you nothing. Everything is temporary. Why does my mind Video get is stuck not in visible, stagnant? Rajiv ji. Not visible, huh? Yeah. Okay, Vinod ji, then you can just speak. Let me try to see if I can do another connection and just connect back with you. Just give me 2 minutes time. Yeah, 5 Yeah, minutes. sure. Yeah. Sure. I'll just log out and see. Yeah. So well, सोनिया जी आप कुछ पूछ रहे थे अभी जब तक राजीव जी 2 मिनट में हमारे साथ जुड़ते हैं. If you do have any question or any query, you may ask me. आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. सर सेम प्रॉब्लम हमारी भी यही है क्योंकि सेम कॉलेज से हैं हम. Who is और आज speaking? हम सर डॉक्टर भारती. भारती जी आप कहाँ से हैं? सर एसयूएस मटक माजरी इंद्री से ही हैं. अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी से हैं आप? हाँ जी सर, सोनिया और मैं दोनों ही हैं. और अच्छा. सर हम बात करने भी गए थे लेकिन आज हमारा वो मसला हल नहीं हुआ तो सर ने मना कर दिया. आप एक काम कीजिएगा. हाँ जी सर. Once the session is over, हाँ जी सर. आप एक बार मुझसे टेलीफोनिकली बात कर लीजिएगा.
ठीक सर। आपके पास नंबर ग्रुप में से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, है ना? हाँ जी। एक बार आप भी और डॉक्टर सोनिया, एम आई ऑडिबल टू यू? तो आपके यहाँ से और कौन है? सर मैं और सोनिया और मीरा मैम है, तीन मीरा तीन लोग हैं सर। अच्छा, हाँ जी। मीरा जी, अच्छा आप किस सब्जेक्ट से हैं भारती जी? सर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल से। और सोनिया जी? वो साइकोलॉजी से। और मीरा जी? वो म्यूजिक वोकल से हैं सर। अच्छा, 2 लोग म्यूजिक से हैं, एक साइकोलॉजी से। हाँ जी सर। कोई नहीं, आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा, है ना? ठीक है सर। फिर मैं स्पेसिफिकली आप मुझे बताइएगा, फिर देन आई मे बी इन ए पोजीशन टू गाइड यू, ठीक है देन यू सर, कैन टॉक थैंक यू। टू द ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ अंजना जी, आप कुछ कह रही हैं, डॉक्टर अंजना? हाँ जी सर, मैं जीसी वुमेन से हूँ सर, करनाल। हेलो। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर व्यूमेन। वुमेन से, हाँ जी करनाल से सर। यही सेम प्रॉब्लम है और हमने इकट्ठे ही ये रजिस्ट्रेशन करवाया था सर। मैं अच्छा, म्यूजिक वोकल से हूँ सर। ठीक है, जी। कोई नहीं, आप भी मेरे से बाद में बात कीजिएगा, ओके सर, ठीक है, है थैंक ना? यू। ये जी। आप डीएवी उससे है ना, डीएवी केवीए? नो सर, गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं? जी जी। ठीक 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 है ओके, अंजना थैंक जी, यू। आप भी बाद में बात कीजिएगा। थैंक यू। और कोई किसी का प्रश्न हो? Anyone having any query other than this? अच्छा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है किसी का, वेरी गुड। रचना जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं सोनीपत से ही हूँ, गेटवे कॉलेज से सर, जीआईटी। अच्छा, गेटवे कॉलेज से। हाँ और जी हाँ प्रिया जी। जी कहाँ से हैं, प्रिया जी? सर मैं भी गेटवे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से ही हूँ। अच्छा, सोनीपत से हैं आप। प्रिया जी, आप भी सोनीपत से हो, है ना? और ममता जी, आप कहाँ से हैं? सर फ्रॉम सेम कॉलेज सर, सोनीपत। अच्छा अच्छा, जीआईटी। गेटवे कॉलेज से। एंड व्हाट अबाउट शैलजा जी? एंड सर गेटवे कॉलेज से। अच्छा, गेटवे कॉलेज से काफी लोग हैं। हाँ जी। दैट्स ग्रेट, चलिए गुड। हाँ, तो आप अब तक जो किया आपने, इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज अवर टाइम, क्योंकि राजीव जी इज फेसिंग सम नेटवर्क इशू, तो उन्होंने बताया वो 1-2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। सर वही है, जैसे आप ये आसन योगा वगैरह जो कराते हैं, पैर जैसे सो जाता है, काफी देर नहीं बैठा जाता उस जी। पोस्चर में, तो हम्म। उस टाइम पे क्या हम सुखासन में बैठ के कर हाँ सकते हैं हाँ, उसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुखासन में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके सर। यदि आपको लग रहा है यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन वज्रासन, हाँ जी। यू मे कम टू सुखासन। ओके सर, थैंक यू। नथिंग टू वरी। या ओके डॉक्टर सर। अंजना? सर आई हैव अ क्वेश्चन। या श्योर, प्लीज आस्क। जी। हेलो। जी जी। हाँ जी सर, उज्जयी प्राणायाम में मैं नहीं कर पाती हूँ, कफ हो जाती है मुझे, उसके लिए क्या करें? हाँ, उसमें ये है, आप करते रहें, जी। डू नॉट गिव अप, आप करते रहें। शुरू में आपको काफी लोगों को कठिनाई आती है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा। आप देखिएगा, अगर आप पिछले 3-4 दिन से कर रही हैं तो हो जी। सकता है आज बीते हुए कल से अच्छा किया हो आपने, आने वाले कल में आज से और अच्छा करेंगी आप। इज इट ओके? ओके, थैंक यू। है ना? हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो कई बार जैसे कोई कफ है या ऑलरेडी आपके गले में कोई दिक्कत है तो कठिनाई हो सकती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम से ठीक हो जाएगा। बस हमने हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए, और ये देखिए, ऑफलाइन बुलाने का मकसद यही है। अभी हम आप लोगों को कुछ करेक्शंस
जो ऑनलाइन मीडियम की अपनी लिमिटेशंस हैं, आर यू गेटिंग? यस सर। है ना? तो इसीलिए ऑफलाइन भी रखा गया है, तो वहां पर कोई भी कठिनाई है आपको और अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। यस प्रिया जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर। नहीं पूछना चाह रहे थे? सर नहीं, चलिए, कल और भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कल मिल गया था, आपने बता दिया था। कौन सी वाली प्रॉब्लम का? तो वो बैक पेन की, कि मुझसे ज्यादा टाइम बैठा नहीं जाता है स्ट्रेट, हाँ, तो इसलिए। अच्छा, तो मैंने बताया था कुशन वाला, हाँ जी। तो इज दैट वर्किंग? इज यस। दैट वर्किंग नाउ? यस सर। सो यू आर हैप्पी? यस। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। गुड 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 गुड, यू आर वेलकम। और हाँ राकेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? बस सर मेरे को भी वही था कि नीज ज्यादा देर बैठने से ना सर ब्लड का फ्लो हाँ सा बंद सा हो हाँ, जाता है, वो सेम अच्छा, मुझे हाँ नथिंग हाँ एल्स। और फिर उसके बाद जब मैं मतलब सीधे करनी पड़ते हैं, मुझे टांगे सुन हो जाती हैं सर हाँ, मेरी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या रहता है, अवर बॉडी इज नॉट यूज टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस तरीके का आदत नहीं है, तो ऐसे में क्या रहता है, इस तरीके का स्टेमिना हमारा धीरे धीरे बिल्डअप होता है। जी सर। तो ऐसे में क्या करना है, हमने मध्य मार्ग अपनाना है। मध्य मार्ग का मतलब क्या है, ये नहीं है कि एकदम कठिनाई आई बिल्कुल छोड़ दिया। आप वज्रासन में बैठिए, जितनी देर बैठ सकते हैं आसानी से, उससे 1-2 मिनट फालतू बैठे। जी सर। मैंने क्या बोला, कितने मिनट? 1-2 मिनट फालतू। उससे क्या होगा, मान लो पहले आप 5 मिनट बैठ पाते थे, अब आपका स्टेमिना 6 मिनट का बन गया, फिर सुखासन में आ गए, फिर दोबारा बैठोगे, हो सकता है 8 मिनट बैठ पाओ। ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अभी तो सर 5 मिनट में ही बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, कोई कोई दिक्कत, देखिए सबसे पहला सिद्धांत ये है, हमने अपने शरीर को कंफर्टेबल रखना है ना? सर। लेकिन वो कंफर्टेबल का हमने गलत अर्थ नहीं ले लेना कि पता चले जी मैं तो लेट करके करूंगा। वो तो सर नहीं, हाँ, वैसे तो उस प्रैक्टिस नहीं तरीके का करनी। नहीं है ना? हाँ वो तो सर योगा ही गलत हो जाएगा। यस यस यस। बाकी जैसे मैंने बताया था, प्रिया जी ने एक्सपेरिमेंट किया, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल पतला सा एक क्वेश्चन लेकर के, यू कैन पुट इट इन बिटवीन योर लेग्स एंड योर हिप्स, उसके बीच ठीक है में, सर। थाइस के बीच में रख दें, तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल। आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है सर। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, यू कैन सिट ऑन द चेयर, और आप सोफा पे बैठ सकते हैं। मैं मतलब और इस पे अपने गद्दे पे आ जाता हूँ तो मुझे हाँ कंफर्टेबल रहता है, लेकिन नीचे बैठता हूँ ना सर जब मैं हाँ हाँ तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस पे फिर भी थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहता हूँ। हाँ, नहीं नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे बैठिए। बैकबोन में कोई इशू नहीं है, बस वो सर नीज जब मुड़ती है ना तो ब्लड फ्लो बंद सुन्न हो जाती है पहले, मतलब जी जी, वो हाँ वही है, वो भी। वो आपने बता दिया, वो सोल्यूशन करते हैं सर। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई किसी को कठिनाई हो? चलिए, जब तक राजीव जी जुड़ते हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा, कोई बताएगा क्या? रिवाइज कर लें जल्दी से, एनीबॉडी? सर तीनों आसन सीखे हैं, कनिष्ठ। डॉक्टर सोनिया, आप दिख नहीं रही हैं। सर मैंने अपने आप को आज वो कर रखा है, वीडियो करती हूँ सर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, अगर जी आप, जी जी। हाँ राजीव जी, हाँ बताइए। सर सोनिया जी, हमने आप क्या कह रहे थे? सर हमने 3 प्राणायाम सीखे, कौन कौन जिन से? वज्रासन में जो हमें बैठकर करने होते हैं। हम्म, फर्स्ट वन इज दिस। अच्छा, 3 स्टेज प्राणायाम की बात कर रही हैं आप? कनिष्ठ प्राणायाम। ठीक, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देन उसके बाद हमने भस्त्रिका सीखा। गुड, बस अभी तक यही सिखाया आपने। ठीक है। अच्छा, उज्जयी श्वास लेना नहीं सीखा क्या? सर आया, धीरे धीरे आ रहा है, पर पूरा कंप्लीट पता नहीं ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, जी। आई थिंक राजीव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। Connection is stable or not? या Okay, या let me share the video and then I'll see. या Give me a minute.
Can you see? Yeah, Rajiv ji. Okay. Is the audio clear? I will switch off my video so that the net is. How do we realize that it's an illusion and not get lost in it? See, here nothing is permanent, everything changes. Tell me one thing that is not affected by time, except me. What aspects of the illusion can help us become free and not more bound? I tell you nothing. Everything is temporary. Why does my mind get stuck in the small things? Because it doesn't know it's small. It's very interesting. Today, is reality what we think, perceive, and experience, or is there more? Reality is the sense that you have when you are in an event or in a situation. You think this is real, that is your own understanding. Like, for example, when you are dreaming, you find the dream is real. Only when you wake up from the dream and you're out of the dream, then you see that it's not real. So any perception which gives you an idea, this is it, this is true, that is your concept of reality. Illusion is, it appears to be and it is not. Something appears to be. You keep a pen in a beaker of water, it appears to have bent. It's really not. So what you perceive The video is not voice is not clear. you understand. Then that is illusion. Excuse me, sir. Video voice is not clear, sir. Is the voice not clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Okay. Rajiv ji. I will see if I can send you a link. Rajiv ji, I have got the link. May I share it? Yeah, please go ahead. Yeah. Vinod ji, I can't hear anything. Is it my? Yes, sir. There is no voice, sir. Is it audible? Not audible, sir. But the video. When you attach the video, did you say share sound there? Yeah, just a minute. Stop sharing, and then there is a button at the bottom. So it Yeah, says yeah. share. Viv, is reality what we think, perceive, and experience, or is there more? Reality is the sense that you have when you are in an event or in a situation. You think this is real, that is your own understanding. Like, for example, when you are dreaming, you find the dream is real. Is it okay now? Only when you wake up from the dream and you are out of the dream, then you see that it's not real. Yes, sir. So any perception which gives you an idea, this is it, this is true, that is your concept of reality. Illusion is, it appears to be and it is not. Something appears to be. You keep a pen in a beaker of water, it appears to have bent. It's really not. So what you perceive is not matching with what you know or what you understand. Then that is illusion. Gurudev, you've said that what we perceive is a small percentage of what reality actually is. So how can we gain the ability to perceive reality? And can you share a little bit about the reality you perceive? Science has said this, you see all science museum, that's what they show you, our band of perception is very tiny. What you see, what you hear, what you smell, what you taste is a small frequency of a vast range of frequencies.
So even the very understanding of this opens you up. You go and watch in the Space Museum, they show you where you are and how vast and big the universe is. And that does something to you, right? It just suddenly gives a bigger context to life. So one thing, wow, right? Gurudev, sometimes what seems to be an illusion becomes what seems to be reality. What's going on here? Is that just in my mind? See, here nothing is permanent, everything changes. Anything changes gives you an impression of illusion. And what our concept or what we think is reality, that doesn't change. If things keep changing, hey, it was there a moment and it's not there, then it's not real. One definition of reality is that which is not affected by time, that which is the same in the past, present and future. Tell me one thing that is not affected by time here, except me. Just that me is not affected by time. Everything else is affected. The body is affected, brain is affected, mind is affected, intellect is affected, ego is affected. Everything. That's why even ego is part of the scenery. It is not you. Ego is Shakti, not Shiva. Mind is Shakti, intellect is Shakti. Ego is power. As much as bliss is also the scenery also. Bliss is also power. If you see it as a power, as energy, as a sensation, as something you experience, it's a power. Bliss is power. Also sadness is power. Misery is a power. Anger is a power. So what we call as negative emotion, they are all powers. And through those powers you can destroy and you can create. Anger can create and it can destroy. More often it is destructive, but sometimes it can create also. Similarly, all other emotions. We don't condemn it, we don't say it's bad. It's all part of the scenery, not the seer. But scenery is married to scenery. Gurudev, you've talked about the concept of seer and scenery. If scenery is the equivalent of Maya or illusion, are there any effective techniques for coming back to the seer while engaged in activity? See, the scenery has its power, the seer has its power. These are two things. What scenery has, the seer doesn't have. What seer has, the scenery doesn't have. It's like the blind man and the lame person. Consciousness is lame. It cannot work. It cannot function. And the scenery is blind. It cannot see, it has no knowledge. So you have knowledge and it has action. Lame person sitting on the shoulder of a blind man. That is what body-mind combination is. Seer and scenery. So the man who sees, he says, go this way, and then the person walks. He says, turn left, and because the person is blind, so he does the action. And they both have their powers, and each power is very unique. That is why never blame this elusive world as bad. This is sacred. That's why it said the concert of Vishnu, of the Lord. The nature is the sweetheart of the divine. So he is the divine is married to the nature. But one is blind and one is lame. What is speciality of human life, human birth? Why it's so special? Because here you have both. The lame sitting on the blind. The consciousness can only know action is on mind, intellect, memory, ego, body, all this can act. So the knower and known, or the scenery, they each have their unique powers and they are complementary to each other.
all of this is temporary. Everything is temporary. Why does my mind get stuck in the small things? Because it doesn't know it's small. At that moment, it appears to be very big and so true, so real. When it appears real, then it gets stuck. Mind can never get stuck when you know it is unreal. You see what I'm saying? See now, you see the sunset, and we see sun is setting, but from a scientific mind, we know it's not true. It's just an appearance, right? So reality keeps getting shifted. On one level, yes, sun is setting, this is so real. But from another level, this is not real. Sun never sets, right? Gurudev, how can I get out of my own head? When you want to get out of it, I tell you, you're already out of it. Why do you say that I want to get out of my head? Because you see, your thoughts is creating an illusion and you are tired of the illusion. Because every time you have a concept and you find you were wrong. If every time you are proven you are right, you would never say, I want to get out of my head, right? Why you want to get out of your head? Because every judgment that you have made, you have seen over and over again, you find it's not right. I told you are wrong. Then you say, oh my God, I just want to get out of this head. Now, how to get into a space where every time you think something or you do something and you find you are correct? Intuitive ability for that meditation. Meditate and the right thought would come. Right thought means an intuitive thought. That doesn't go wrong. Gurudev, we realize we're dreaming when we wake up. So while we're 100% engaged in this illusory nature of this world, how do we realize that it's an illusion and not get lost in it? When you are lost in the world, when you realize you are lost, you get out of it. You have already out of it. Now, as long as it appears to be real, it doesn't appear to be illusion to you. But when you realize it was not real, when you feel it is no more charming and it doesn't matter to you, and says, hey, this is all illusion. I am just getting stuck, and I was getting stuck unnecessarily. It's only a post-mortem. It's not a real diagnosis. Whenever you realize this is illusion, you are only doing what? Post-mortem. That's it. You are done. One very great poet in India, he was watching the play, and the play was so good, and this poet got so engrossed in it, and he removed his shoes and just threw at the person. And then suddenly, then he realized, oh, it's just a play. He was just playing the role of a villain. And then he went and asked, you give me my shoes back, because he has to go back. But they said, sir, no, I want to keep this as a souvenir. I'm not going to give you your shoe back, sorry. Because this shows that how well I acted, and it just got you so engrossed in it. So when you are so engrossed in something, you just be 100%. Why do you want to split? When you get tired of it, oh, then you say, just shut it up. You're watching television and selling sunset, and you feel so sleepy and tired. Hey, come on, you switch off and you doze off, right? So when you are tired of watching the movie, then you snap out of it. Yeah. While watching, why do you have to say, oh, this is just television, this is illusion? Why do you have to do that? It will create a split personality. When you are watching, watch. And when you snap out of it, just take a good nap and don't get into nightmare selling sunset in your dreams. There's a nice story. Adi Shankara was saying, everything is illusion, life is illusion. And then what happened? A crazy elephant came on the street chasing him. Everybody ran for protection, They ran to shelter themselves somewhere. And Adi Shankara also ran. Someone said, hey, come on,
You said everything is illusion, the elephant is illusion, why are you running? He said, yes, I still say, I hold on to my theory, my running is also illusion. So, illusive word, and illusive action, and illusive compassion too. And illusive suffering needs an illusive compassion. Got it? Gurudev, are there any examples of ways we can remain more firmly established in truth while fully engaged in our activities and our relationships in the world? Leave this more out. Why you want to be more perfect? I'm asking a question. Why should you not be imperfect? Because you take things too seriously. If you take it as a play, as a game, as a drama, as a movie, then you like all sorts of things being there. Correct? I want to be more perfect, I want to grow more. Where do you have to grow more? The plant doesn't say, I want to grow more. Whatever it is, its size, it's happy. Right? This doesn't say, I want to become a banyan tree. Nobody will keep this plant, this rodents inside their home. Right? Whatever you are. Gurudev, when the mind gets caught up in things, disturbances, judgments, when we're caught, how in those moments do we take life lightly, like it's a game? Well, you have been through many nightmares. When you wake up, you just have a cup of tea and then be done with it. So, time and again we have to remind ourselves, hey, come on, this is all a dreamlike state and I'm going to get over this. And this is not the first time you have had this experience many a time. A traumatic experience never comes to anyone for the first time at a later age. It only gets recreated, which has been there from childhood for this or that. We get upset or something or other. But we forget all that. And we have forgotten how we have been dealing with them also. So just a gentle reminder about our own past experience can help us to snap out of it. You can try that. Knowledge and wisdom, I tell you, is the best way to awaken oneself. Gurudev, we're sitting here with you in the illusion, and yet your presence is helping us transcend that illusion. When we're not in front of you, what aspects of the illusion can help us become free and not more bound? I tell you, nothing. Nothing whatsoever can help you. Now what? You are left, right? You are left lurching. That will bring the freedom. We try to hang on to this or that or that or that. See, nothing to hang on. And then the reality dawns. See, let's not go to ultimate. We want ultimate happiness. We want long lasting. We want more and more. And let us drop all this. Let's go step by step. What you see, is this real? Go on questioning the present. And it, layer by layer, it leads you to something bigger, something higher, something more than what you think you know and you believe. So it's always good to go one step at a time rather than thinking about, 1,000 mile. Even if it's 1,000 mile, it has to begin with the first step. So the first step is to see, is this real? This question, is this real? Who am I? Is this all what the life is? I say, no. Okay, what's next? Then when you keep asking what next, you'll be right here and now. You go in the depth of now. This is very interesting. It's an oxymoron. Yet, you see, that is the truth. You say, what next? There is nothing next. But that is what is going to bring you to now and here. When you are happy, you wonder, oh, is this real? Isn't it? When you are miserable, you know it is real. When things are joyful, you ask the question, is this real? That's very strange, isn't it? So you question the truth. Whatever is real, you question it, whether it's real. And whatever is not, we believe that is how it is.
Misery we believe more and we question the reality. Gurudev, when dealing with things like chronic health issues, chronic pain, what's happening in the body feels like reality. How can we move past this so it doesn't drain the prana and interfere with life? Don't resist them. You see, this, if there is a pain in the body, you can't say, I don't have pain. You have pain. Be with it. It's an intense situation. You know, if you have done our advanced program, we have this process, meditation in motion. What happens when you are doing the process, there is pain and then it turns around and appears to be more pleasurable. So pain and pleasures are intense sensations in the body. But what you see is you are beyond the sensation. This experience simply dawns when you accept it. The more you keep resisting it, it takes longer for you to get out of it. The more you welcome it, okay, I accept it, I'm with it now. Then you see you get the strength to overcome that. How do I cultivate in my child that there's more to reality than what we see, touch, and feel? You know, you cannot force anyone to see the reality. You can only gently guide them. It's impossible to make someone realize the truth beyond their perceptual reality. Time and maturity and right education will all lead them to that direction. And exposure to wide range of knowledge. And meditation, of course. Identities, they get developed in society naturally. You don't have to do much about it. All that you need to do is making them realize they are much more than the identities that they are identifying with themselves. That identity is just like a coat or a jacket or a sweater, which you can put on and remove it anytime you want. This is what we need to teach them. Rather than thinking the identity as your own skin, which you can never get rid of, unless you go to the grave. Even there, your skin remains in the body. So, this type of understanding has to be created. It's okay to have whatever identity you want to take on, but you should know how to get out of it or see beyond the identity. So, beyond identity, you are the most beautiful, unidentified living object. Gurudev, in our day-to-day experiences, life becomes very charming, and often we don't want to give up the charm, but we know there's something beyond that, the reality. Can we blend the two? We think the reality is not so charming. It's bland and something else here is charming. No, that's not so. Whatever charm you find here is just a reflection of reality. The reality is more charming than anything whatsoever. Truth is the most charming thing. But in the beginning or in the initial stages, truth appears to be very bitter. That's when you are steeped into one illusion. And when you're just coming out of one illusion, appears reality is very harsh. But in fact, it is the consciousness, the existence of consciousness deep inside of you that brings out these feelings of charm, and it reflects on anything you do. When you are logged on to the reality or the truth in life, then everything is charming. Everything doesn't become dull and boring. Everything is absolutely charming. शैलजा जी, आर यू स्पीकिंग? आप कुछ पूछ रहे हैं क्या शैलजा जी? ठीक है, विनोद जी, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, किसी के मन में कुछ प्रश्न है? एक्चुअली है ना, टुडे व्हाटएवर गुरुदेव टच्ड अपॉन, माइंड is infinite, and the desires are also unlimited, but the capacity of the senses to actually enjoy is limited.
हमको लगता है कि I need more money, but how much money can you really spend? When you see the most beautiful scenery, after a while your eyes just close. You cannot see anymore because your senses, the capacity of the senses to enjoy is limited. Yeah? आपको पहला रसगुल्ला अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा लगेगा, कोई आपको 20, 25, 50 खाने बोलेगा तो अच्छा लगेगा. But the mind always wants more. Yeah? But the capacity to enjoy something is limited. This imbalance will always remain. And this, our imagination and concept in the mind is what clogs our mind and does not allow us to experience the infinity that we are, the infinite consciousness that we are. हमने 3 states of consciousness के बारे में बात किया, right? क्या है? Waking, sleeping, and dreaming. Now there is a 4th state of consciousness as well. Meditation. तूर्या अवस्था बोलते हैं, जिसमें neither we are sleeping, nor we are dreaming, nor we are awake. Somewhere in between. We really don't know where we are. But the knowledge that I am there, I am here, I am is there. This is a glimpse of the 4th state, which is the deepest state of rest. The deepest possible rest that you can have. And when you come out of that state, that is why you are so fresh, so delicate, and so beautiful. So we will delve into some of these concepts later on, but also because of some, see, like I can tell you, I connected a screen and the waves have moved from here to your screen. But it is not visible on your screen. Because it is not visible on your screen, whatever I showed you, or the audio was not audible to you, you say it is not there. But is it a fact that it is not there? A live example of how things work. Yeah. So this whole program in this last 1 week, whatever we are talking about, is to get ourselves into a space of, oh, what I understand is so little. Like Gurudev said, here today in this video, he said, right? A sense of perception is a very, very minute frequency. So as we go deeper, we will have a chance to experience that infinite consciousness that we are. Any questions on that? I don't remember what all things Gurudev said. He did speak about the band of perception. That's what he said. Yeah? So when the concept of our perception matches with what is visible, we think that is real. No, it is just a concept. It's just a perception. Which questions hai kisi ka? Sorry for this connectivity issues. I didn't think that we would have. So whatever little bit that I have a couple of videos to show you. So tomorrow we might have a slightly longer session. Yeah, it is possible that we might have a slightly longer session tomorrow. Because today I'm in Bhopal. Tomorrow in Delhi, I am hoping that I'll have better connectivity and things will be better. So any questions? Any questions on the last 1 week that we spent tomorrow is the last day of the online session, but in the last 5 days that we have spent together, is there any questions at all? I will summarize everything tomorrow, but today, is there any questions? So I know that these are some things that we want to touch upon. Neeraj says crystal clear. I am not crystal clear at all, but it's good that you are crystal clear. ठीक है? Yeah, कोई questions है? किसी के भी मन में किसी की चीज के बारे में? Anything that we spoke at all? सर ईगो गुड है या बैड है हेल्थ के लिए? ईगो गुड है या बैड है हेल्थ के लिए? आप ही बताओ। सर उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। कुछ कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ईगो भी होना चाहिए कुछ। आपका अनुभव क्या है?
मेरा अनुभव तो ये कहता है कि सर ईगो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार सुनने में आता है कि कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ ईगो होना आपने चाहिए। इतने साल का जीवन अनुभव किया ना, आपका अनुभव क्या है? कॉन्सेप्ट मेरा में मत अनुभव तो जाओ सर, बस। हाँ, मेरा अनुभव तो यही है कि सर ईगो नहीं होना चाहिए। क्या ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, फिर आप सही है। जो आपके जीवन में अनुभव में आया वही सही है, ओके, है ना? बट या मैं तो आपका नजरिया जानना चाह रहा था सर। मेरा नजरिया जान के एक नया चीज आप कॉन्सेप्ट अपने मन में डालोगे, क्या मतलब है, क्या जरूरत है? ओके ओके सर, ओके। सर ईगो, हेलो, जर्नी इज अबाउट अनलर्निंग, क्यों और एक नया चीज अपने अंदर डालो और फिर उसको किसी दिन अनलर्न करना है? मैं क्या पता सर कुछ नया चीज नया सीखने को मिल जाए आपसे कुछ। अच्छा देखो, ईगो रखना है तो ईगो शुड बी लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यू नो, जहां पे योर एलिमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल कम्स व्हेन इट इज लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू जस्ट शो योर एग्जिस्टेंस, है ना, सो दैट पीपल डोंट वॉक ओवर यू लाइक अ डोरमैट। अगर ईगो सही में रखना है तो बहुत बड़ा ईगो रखो, लाइक इट बिकम सो ब्लोटेड दैट वन डे इट विल burst and you will fall down and you will know. Our objective in life about consciousness is to go beyond the ego also. So from that realm, you don't need any ego. From the realm of living in transactional world, a little bit of ego, like a pinch of salt, is okay. Neither having ego or not having ego is good or bad. But when ego becomes hard, you become like a stone. You completely put a wall in front of you. You're not ready to listen to anybody. है ना? लेकिन वो भी इतना हार्ड हो जाएगा कि आप जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार ही नहीं कर पाओगे, तो वो भी टूटेगा, ऑप्शन ही नहीं है। No, even that will break. So it's okay to each his own journey. ठीक है। हेलो, या नीरज जी। सर एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ ईगो जो है वो किसका फीचर है, कॉन्शियसनेस का, ये मतलब मैटर का, हमारी बॉडी का, और ये फीचर रिक्वायर्ड है या अनरिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है या अनरिक्वायर्ड है तो हमने आंसर कर दिया, बट आप बताओ ये बॉडी का फीचर है कि कॉन्शियसनेस का फीचर है? बिकॉज जो ईगो है वो भी मतलब टाइम बाय मतलब चेंज होता है, मतलब नहीं, मतलब हमारी जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ खाली कि मतलब आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड के कॉन्शियसनेस में कोई भी अनडिजायर्ड क्वालिटी नहीं होती, मतलब ऐसा, मतलब मैंने जो पढ़ा है और जो जाना है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी क्वालिटी है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, इनवेरिएंट है, एंड मतलब वो कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो मतलब अनरिक्वायर्ड है, समथिंग लाइक दैट। तो ईगो जो आता है मतलब वो कॉन्शियसनेस में क्रिएट होता है या मतलब मैटर का पार्ट है, बॉडी में मतलब क्रिएट होता है? If I ask you a question, is Satan a part of God? Is something that is pure, right? जी। Is Satan a part, and God is omnipresent? जी। Is Satan a part of God or outside God? Pardon? Is Satan, शैतान जो बोलते हैं, वो भगवान के बाहर है? Is a part of God? No, it is a part of God. Actually, मतलब अगर हम इसको यूं कहें कि it is just it is a result of some bad efforts or bad karma. That is the shaitan basically. So it is just a manifestation. Okay. It is just a manifestation. जो प्योर कॉन्शियसनेस है, इट कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स जी, बेस्ड ऑन many factors. It is a manifestation, like I said, the mind is one part of the consciousness. जी, बिल्कुल it सही। can have good thoughts or bad thoughts, and that is not what you are, because you are pure consciousness. जी।
मिंटू से मतलब we are मतलब in मतलब in the earlier stage or in the and the time of birth मतलब we are just the pure consciousness. Correct. Okay. I agree. And with during the and you are pure consciousness even in the transition of sleep and waking up. Also, you are pure consciousness. Every day you have a chance or a glimpse to experience yourself being pure consciousness. इसलिए मैंने कल भी कहा था कि don't be in a rush to wake up. हमको अगर 9 बजे जाना है, ऑफिस जाना है, तो 8 बजे उठोगे तो कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा. 6 बजे उठोगे तो थोड़ा आराम से उठने का एक मौका मिलेगा, तब ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि that purity of consciousness is there in us and we experience it every single day. In between that waking and sleeping state, you are pure consciousness. And there are many times as well when you are pure consciousness. इसलिए हमने उस दिन भी कहा कि at some point of time, for no reason, joy dwells up in you. You are happy. You are joyful for no reason. Those are the times you are in touch with yourself. बिना कुछ कारण के आप खुश रहते हो, which means you are in the self. That could be the reason. Yeah. Sir, yes, sir. Yes. Did I answer your question? Did I make sense or did I just blabbered? Little bit I got. So which part did you not get? Actually, my question was that regarding means when we are pure conscious, okay, consciousness we are pure, okay. So ego, from where it can generate? When you are pure consciousness, you are not the ego. Which means you have transcended the ego and you are pure. Who's saying I am pure consciousness? When you are pure consciousness, there is no ego. When you are in all these 6 layers or 7 layers of existence, there is ego. Okay. So you are pure consciousness, but realizing that you are pure consciousness and that becoming a nature of your existence is a different state of being. You come in touch with your pure consciousness in between for some time. Sometimes when you are meditating, sometimes when you are in those states, you are in pure consciousness. But जैसे ही आप उस state से बाहर निकलते हो, व्यावहारिक दुनिया में आते हो, then you are not pure consciousness. But if you get back to think, then you are pure consciousness. Yeah, थोड़ा सा, I mean, you have to understand that space. Yeah. In the thoughts and in the reality, means there is a gap. जैसे आप ego को transcend करते हो, then what you are is pure consciousness. Okay. Now telling whether ego is a part of consciousness or not, yes, in a way, yes, but no. When you are in that state, you are pure consciousness. There is no ego at all. Okay. अब मैं आप ही के वो क्वेश्चंस का आंसर आपने नहीं दिया. एक वो जो शैतान है वो मतलब गॉड से परे है या गॉड के साथ है, मतलब जो आप बता रहे थे वो मैं उसको जानना चाहता हूं. When you say God is omnipresent, God is everywhere. Now shaitan can only exist in the everywhere, in the realm of everywhere. So shaitan has to be a part of God, right? It cannot be outside God. जब भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो शैतान कहाँ रहेगा? इस हर जगह के बाहर तो रह नहीं सकते. तो है ना? So these are things for you to experience and understand. These are things for you to dwell upon. You will get the answers yourself. Even if I say the answers, it makes no sense to you, may not make any sense to you. Mean to say, you are saying that God is omnipresent, okay? And God is also consciousness, pure consciousness. We are saying this. That is why in the scriptures, the first experience of God is third person. Second is you see God in the person next to you. Third is you say that I am God. Wo state, when you say I am God, you are not saying it from a state of ahankar. You are saying from a level of experience. Means it's a little bit contradictory, third stage you told that when you say I am God. पहले हम भगवान को एड्रेस करते हैं तो कैसे करते हैं? भगवान वहां है, मंदिर में है, कहीं है और प्रार्थना करते हैं, है ना? जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हमको भगवान दूसरों में दिखने लगता है. That is what the scripture says, right?
And when you get evolved, more evolved, you think that you know that you are God because you are pure consciousness. There is no difference between you and the infinity. When the wave loses its identity, it becomes a part of the ocean. It is a part of the ocean, but for some period of time, the wave has an identity and thinks it is a wave. It has its identity, it has a name, it has form. जैसे ये name or form dissolve हो गया, it becomes a part of the infinite. That Gurudev said to that boy, no, you are Akash. You know, in that video. Then you So, that. Yeah, Priya. sir, you are saying that God is everywhere. I am not saying So, God sir, is have you heard about Om Shanti organization? Om Shanti organization. Have you heard about it? So, sir, actually, मेरी फैमिली में सब वहां पे मानते हैं ओम शांति को, एंड दे से कि गॉड इज नॉट एवरीवेयर, वो सब जगह नहीं है, और जो कहते हैं कि हर किसी में है, हर किसी के अंदर है, ऐसा भी नहीं है. तो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि गॉड इज एवरीवेयर और गॉड इज नॉट एवरीवेयर. My understanding is all from Vedant. वेदांत में यही बोलते हैं कि भगवान है सब जगह, है ना. So my understanding of it is from the scriptures. So I don't have, and it is because it is a level of my understanding from the scriptures, it is not a level of my experience. Maybe I may be wrong, I don't know. I will allow that space for me to be wrong as well. I will own my own self being wrong the day I realize it. But from that concept of my understanding and my basic experience in life, I feel that from a perspective of Vedanta, it starts with Dvaita and comes back to Advaita. You know, the Advaita philosophy of Shankaracharya says that everything is one. Going from duality to oneness, that is the objective. So I don't know whether I'm wrong, and I don't even want to debate on it, because the day I realize it I am wrong, I will move on to something else. Okay. So but sir, we are in a situation, I mean, I am in a situation कि जहाँ पर मुझे बाहर से सुनने को मिलता है कि God is everywhere. मैं हालांकि I don't believe in Om Shanti, to be very frank, मैं नहीं मानती हूँ इस चीज को, बट मेरी फैमिली सभी मानते हैं. तो ये चीज मेरे माइंड में बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि क्या ये सच है कि गॉड इज एवरीवेयर, या फिर ये सच है कि नहीं, वो सब जगह नहीं है, वो सिर्फ याद आप करोगे, उसको मेडिटेट करोगे, ध्यान लगाओगे तो मतलब आप उसको पा सकते हो. वो चीज है जो उसमें बोलते हैं. तो मैं वहां पे ही कंफ्यूज रहती हूँ कि क्या सच है, क्या सच नहीं है. मेरा ये समझ है कि अगर भगवान को पा सकते हो तो भगवान इज अ ट्रांजैक्शनल कमोडिटी. भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं है. There is nothing to seek God. If there is something to seek, it is transactional. कल हम पैसे देके चीजें खरीदते वैसे भगवान को खरीद लेंगे. नहीं तो all the rich people would have got God by now. नहीं सर, वो they are not saying कि God को पाना है. मतलब we have to just see. I don't want to doubt or debate other organizations here on this program at all. Neither do I want to doubt, nor I want to debate, nor I want to say they are right or wrong. Everybody has some things. I am just saying from a Vedantic perspective, the idea is of going from a space of duality to a space of one. से अद्वैत तक जाने की जर्नी है ना. मेरा सर सॉरी मेरा छोटा सा क्वेश्चन मतलब मेरा उठ गया अभी इसी बात को लेके कि अगर सभी में भगवान है, मतलब आप कह रहे अद्वैत से द्वैत में आना, जो आप बता रहे हैं, दो तरह की जो फिलॉसफी है ना, तो अगर सभी में भगवान है तो ये जो दुनिया की अब जो दुर्गति हो रखी है, जो इतने जो बुरे कर्म हो रहे हैं, जो ऐसा माहौल डे बाय डे क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे को मारने के पीछे लगे, तो भगवान क्या चाह रहा है कि मतलब ये कुछ चीजें कहीं मतलब मैच नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो सब उसका जी. Sorry, go ahead. Sorry, I didn't hear you. मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर मेरे अंदर भी भगवान है और मैं कोई बुरा कर्म कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो is it a God's desire? मतलब means God want to do something that is not accepted by the society, accepted by the universe.
देखो आप जो चीज करोगे उसका कर्म का कॉज एंड इफेक्ट आप भुगतोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि गॉड करवा रहा है तो गॉड भुगतेगा, आप चिंता मत करो फिर। नहीं मैं तो इस जी मैं इस फिलोसफी से थोड़ा अलग हूँ कि भाई गॉड है सबके अंदर। जी मैं बोल रहा हूँ अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो आप भुगतोगे, अगर आपको लगता है भगवान आपसे करवा रहा है तो भगवान भुगतेगा। नहीं अब मैं तो इसी बात में हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि सबके अंदर गॉड है या तीसरी अवस्था गॉड है, मैं ही गॉड हूँ। आज भी कुछ कह रहे हैं कि आई एम ब्रह्मास्मि। मैं आई वाज टेकिंग अ प्रोग्राम फॉर समबडी हु हैज कमिटेड 28 मर्डर्स। ओके, एक हार्डकोर सेल के अंदर प्रोग्राम ले रहा हूं और वो व्यक्ति मेरे साथ प्रोग्राम के बाद फूट के रो रहा है। अब उस स्टेट में I can see the purity of that consciousness. He might have been whatever he has been in all these years and he is going through the prison sentence, he might even be hanged, all those things are fine. But every moment there is a possibility for that consciousness to be ever new, ever fresh. And you are ever new, ever fresh every single day, every single moment. समझ में आ रही है बात? जी। So उस moment पे what I saw in that person who has committed so many crimes is also pure consciousness. You know, it is just a manifestation at different point of time. And the world is of all sorts of things. There is creation, there is sustenance, there is destruction. Nothing new can come in this world without destruction. है ना, आप नया घर को भी बनाने के लिए पुराना घर तोड़ते हो, है ना, तो आप बोलोगे that is a wrong thing to do to break that house. But कोई नई चीज की उत्पत्ति के लिए पुराना चीज जाता है. So that's the law of nature. So that's the difference. Yeah, that's the difficult part because हम ये सारा कुछ हमारा इंटेलेक्ट से हम डिफाइन करते हैं ना हर चीज को. हम बुद्धि के स्तर पर हर चीज को नापतोल करते हैं. लेकिन नहीं, हमको ये भी पता है कि जो हम जानते हैं वो कहीं 0.0001% है. और फिर हम उसको दुनिया की चीजों को हम उस 0.001% के रेंज में मापने की कोशिश, मापतोल करने की कोशिश करते हैं. तो मैं ये नहीं कहता हूं मुझे सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता है. मुझे इसकी पूरी बनक है कि मुझे सब कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं पता. मुझे बहुत छोटा अंश इस जीवन के बारे में या इस दुनिया के बारे में पता है. वो भी कल जो पता है उसको भी कल कोई विनोद जी आके वो कॉन्सेप्ट को तोड़ सकता है मेरा, है ना. तो पॉसिबिलिटी के साथ हम जीते हैं. So let's see the new experience and realize the things कि, है ना, अभी आने वाले और सेशंस हैं अभी, फिर उसके बाद शायद चीजें कुछ मे बी बेटर क्लियर हो जाए, है ना. क्लियर नहीं होगा तो भी आप मनन करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी. मैं क्लैरिटी देने वाला कोई नहीं होता. नहीं, एग्जैक्टली नहीं, मैं तो जैसे हम लोग शुरू से, आज से नहीं, हम लोग मतलब मानव सभ्यता जब से आई है तो हम लोग बोलते हैं भगवान को तुम ही माता पिता हो, तुम ही बंधु सखा हो. अगर सभी में भगवान है फिर ये माता पिता कौन है ना. फिर हम किसको हम लोग मतलब रिमाइंड करा, मतलब थोड़ा सा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं माइंड के अंदर. सो मतलब लेट्स वेट एंड वॉच. बहुत सारी चीजें हैं. देखो एक चीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्क्रिप्चर्स में है जिसके आपके माता पिता ने उनके माता पिता से कभी क्वेश्चन नहीं किया. वो जो बोलते थे वो मानते थे, ठीक है ना. और आप अपने स्तर पर जब आपके बच्चे आपको क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसका आंसर, तो बच्चे सुनते नहीं हैं, है ना. तो दिस जनरेशन इज अ जनरेशन हु वांट्स आंसर्स टू थिंग्स विदाउट व्हिच विल नॉट लिसन. My concept in my entire life was I used to walk 20 every Tuesday night at 12 a.m. in the night, 12 p.m. in the 12 a.m. in the morning till 3 p.m. Go to a place called Siddhivinayak in Mumbai, to the temple with my friends and sit outside the temple. Okay, I have never gone inside a temple. I would have done this exercise for 100 times, maybe in 5 years, 6 years, whatever that. But I never entered a temple. Because my concept in my head was so sharp that if God is everywhere, why should I go to the temple? And I lived with this concept and I debated this concept with every single human being. Nobody could resolve this.
Till I met Sri Sri Ravi Shankar, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, I came to his ashram. The first day I came to the ashram, I have never met him. I have never spoken to him. I have never seen him. This is the first glimpse of him. And there is a satsang going on and people are asking questions. I'm not even attentive because I'm too occupied with myself. I aage hain to baithe hain. And Gurudev on that day looks straight at me and says, if God is everywhere, why can't you see God in that stone? I was baffled beyond my wits. I ran away from that place. बिल्कुल सही. मैं मतलब because we are the generation of science generation. We believe in a cause and effect. Okay. So वो concept मुझे किसी ने answer नहीं किया इस चीज को. If God is everywhere, why do I have to go to the temple? But Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji answered that question that day for me. You know, बहुत सारा चीज साइंस के बियॉन्ड है. आप अभी पूजा के टाइम पे कभी कलश रखते हैं ना पूजा में, है ना, देवी पूजा के टाइम पे या कुछ टाइम पे कलश रखते हैं, ठीक है. There is this actually APJ Abdul Kalam many years back, there was the puja, he believed in many of these things, so he had sent a few scientists because he said जो कुछ चीज का आंसर चाहिए तो आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिलो. So a few scientists had come over, you know, and पूजा के टाइम पे कलश के अंदर the water in the kalash does not change, but after the chanting of the mantra, the weight in that thing changed. अब पानी उतना ही है, कलश भी उतना ही, weight कैसा बदला? You know, like there is a scientist in, like Gurudev was saying yesterday, there is a scientist in Japan who has done a research on कि पानी से जब बात करते हो, अच्छी चीजें बात करते हो तो पानी का vibration different. Agree sir, ये sir ये experiments it is you know without any doubt we accept. नहीं beyond any doubt नहीं. अगर हम देखोगे तो मुझे कोई आंसर साइंस के हिसाब से वो चीज का आंसर नहीं मिलता है. Today science के हिसाब से मतलब we can say that the energy travels all over the world. We are in the web of energy. There is some positive energy and negative energy. That concept has hardened in you. ये concept आपके मन में strong है इसलिए आप believe करते हो. But people quantum physics वाले लोग हैं वो अलग चीज बोलते हैं. No, they believe in the vibrations. Yeah, quantum physics also believes in vibrations. They believe in vibration and string theory, right? So they have a different concept from what Einstein spoke to what Newton spoke to. Even the three scientists who got an award this time, he says what is the realism of locality is also completely thrashed by these three people who have got the Nobel Prize this time. You know how things happen is in a different realm. बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है. And science also, if you look at it, there is an interesting book called Lipitor, the Thief of Memory. You know, I think it was written by an author called Duane Graveline. I'm not sure about it. He is a surgeon who has done many operations on people, cardiac surgeon, I think. And he talks about statin drugs. ना बहुत लोगों को statin drugs देते हैं ना cholesterol reduce करने के लिए. You know, he says that is the cause of many of the diseases to do with the memory, Alzheimer's, to many things. So now there is a research which says that cholesterol is not the cause of really many problems. So science has changed its benchmark from time to time, whether it is the blood pressure markers or whether it is markers for sugar levels to anything, everything has changed because many of these experiments are done with a different intention sometimes. Yeah. Yeah. Sir, have you ever about the global hospital in Mount Abu, Rajasthan? I haven't. Just whenever you get time, just go through the website because there is a special, you know, therapy or treatments which is done with the help of meditations and your vibrations and all the things. Okay. And they just avoid or they don't use any drugs or like this thing for even for the you can say the treatment of the any type of disease. Okay. So just go through because I have physically realized the things there actually. Okay. Neeraj man, I will look into it. Which hospital, Neeraj ji? Which hospital? That is a global. से बाहर निकाल दो. Global.
Global That is a hospital. global hospital, Mount Abu, Rajasthan. Okay. But just we just wait and watch in the new, because there are a number of sessions. Okay. So बहुत सारी जो गुत्थियां अभी खुलने वाली हैं दिमाग की. अभी तो आपने मेडिटेशन किया है कुछ दिन, अभी तो सुदर्शन क्रिया किया भी नहीं है, तो देयर इज much more to experience and see. अभी तो मतलब हमारा गुरुजी एक लाइव सेशन अटेंड करवा दीजिए सर. अच्छा ठीक है, देखते हैं. ठीक है, डन. शैलजा जी कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है. डॉक्टर भारती? No, sir. No, sir. Okay. All right. So I think today will be आप एक काम करिए, प्राणायाम तो सबको पता है, तो आप ब्रेक के बाद सिर्फ ध्यान ही करा दीजिएगा, है ना. प्राणायाम कल देखते हैं एक और बार, क्योंकि आज तो लेट हो गया. ठीक है ना. ठीक है, देन विल टेक अ क्विक ब्रेक. 8:23 हो गया, 8:30 को आ जाते हैं और ध्यान करते हैं फिर. ठीक है. All right. Okay. Thank you for this interesting discussion. Yeah, thank you, Rajiv ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Well, so we meet at 8:35. 10 minutes break. Okay. Okay, sir. 10 minutes break, and then we'll do the meditation.
Welcome back. So are you here? So please come back so that we can start the session, last session of today. चलिए, अभी बुद्धि के स्तर पर बहुत बातें हो गई, अब अनुभव के स्तर पर चलते हैं. So are you ready? Oh wow. तो अब हम क्या करेंगे, आप एक ऐसी जगह बैठे जहां पर कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, और क्योंकि सर्दी है तो शॉल वॉल आप लेकर के आराम से अपना अच्छे से कवर करके बैठे. चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, बस लेटना नहीं है. सहारा लेके बैठ सकते हैं चेयर का, है ना. कुशन ले लीजिए, आराम से बैठे कंफर्टेबली. और जो लाइट है उसको आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं. लाइट बहुत ज्यादा ना हो, लाइट को थोड़ा कम कर दीजिए, है ना. तो अभी मैं एक ऑडियो प्ले करूंगा, तो बस आपको पता है, भोले भाव जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी आप उनको सुनते जाएंगे, है ना. तो so all are settled. So should we start? Well, बस एक बार आप ऐसे थम्स अप कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आवाज आ रही है ना, जब मैं ऑडियो लगाऊंगा. अच्छा, पीछे वाला जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें आवाज क्लियर थी एकदम? वेरी गुड. चल, सो हियर वी स्टार्ट. Is the audio clear? Good. हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना है. सबसे पहले अन्न रसमय कोश, माने हमारा शरीर और वातावरण. दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा संचार कर रही हमारा शरीर में, कण कण में व्याप्त है, वो प्राणमय कोश है. फिर मनोमय कोश जो विचारों से बना है. फिर चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, जो भावनाओं से बनी, विचार से भी सूक्ष्म जो भावनाएं हैं उनसे बनी है. फिर पांचवी कोश है आनंदमय कोश, जो भाव से भी अतीत और सर्वव्यापी हमारी चेतना का स्वभाव है. तो आनंदमय कोश जो सब जगह व्याप्त है, उससे युक्त विज्ञानमय कोश. फिर मनोमय कोश जो विचारों से युक्त है. फिर प्राणमय कोश जो प्राण ऊर्जा से युक्त है. और अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ हमारा शरीर और चारों ओर के वातावरण है. हम अब एक एक कोश को स्मरण करते हुए ध्यान में उतरते हैं. आराम से बैठ जाएं. रीढ़ की हड्डी सीधा हो, शरीर को ढीला छोड़ दें. आंखें बंद कर लें. एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें.
फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब चारों ओर जो भी आवाज हो रही हो उसको सुनिए। इन सभी आवाजों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं। अब हम अपना ध्यान शरीर पर लेके आते हैं। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ें और शरीर को सम्मान करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। हमारे शरीर के कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर को और ढीला छोड़ दें।
शरीर बाती है तो मन ज्योति है। हमारे शरीर के भीतर बाहर मनोमय कोश है। जो भी विचार मन में आ रहे हों आने दें, अच्छे विचार बुरे विचार सबको स्वीकार करते जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जो भी भावनाएं उठ रही हो मन में उठने दें। सुख कर भावना हो या असुख कर भावना हो, उसको स्वीकार करें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जैसे जैसे शरीर को ढीला छोड़ते हैं मन फैलने लगता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सभी भावनाओं को स्वीकार करें। किसी भी विचार हो या भावना हो उसे न टोके न रोके, आने दें,
शरीर को और ढीला छोड़ें। केवल विश्राम। विश्राम करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते आप आंखें खोल सकते हो।
Slowly and gradually, whenever you feel complete, you may gently open your eyes. बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोल सकते हैं। So how was the meditation? Was it good? Very nice, sir. Good, good. Do you want to share your experience, Neeraj ji? Yes, sir. That's very nice. And, feeling, very lighter than the previous stage, we can say. आप दिख नहीं रहे हैं मुझे, नीरज जी। जी हाँ, यस सर। मतलब पहले से बहुत ऐसा हल्कापन सा मतलब महसूस हो रहा है कि मतलब अलग ही नींद से जागे हूँ कुछ, जैसे मतलब कुछ पल यहाँ थे ही नहीं, ऐसा मतलब फीलिंग्स थोड़ी सी मतलब ये फीलिंग मतलब जस्ट वी कैन रियलाइज बट इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बेसिकली। No need to explain. Yeah, but it's a total new experience, we can say. Now you see, there is a sign of question mark. Can you draw, Neeraj ji? Pardon, sir? Can you draw sign of a question mark जैसे मैंने किया? Yes, sir. Yes. अब आप क्या करें, इसका ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा जी इमेजिन करें आपने पकड़ रखा है, पकड़े जरा। जी सर। जी ऐसे होता है ना क्वेश्चन मार्क, ऐसे होता है ना? ऐसे होता है, यस सर। इसको पकड़ो जरा, खींचो। जी। अब बताओ ये क्या बन गया? ये लाइन बनते जा रहा है सर। और फिर क्या बन जाता है? वन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन, यस सर। बस, दिस इज द होल जर्नी। हमारी पिछले सेशन में आपकी बुद्धि में कितने प्रश्न आ रहे थे? आ रहे थे? यस सर, बिल्कुल सर। अब क्या आ रहा है? यस, बिल्कुल, यू आर राइट सर। ओनली वी आर इन ए वाओ स्टेट। वाओ। यस सर। आर यू गेटिंग? यस सर। So this is the journey. From where we start, do like this. Question mark. Where we end? Explanation. Yes, wow. Yeah, no, it's really, really nice experience, Wonderful experience. Anyhow, तो अभी कल का दिन भी है, और सबसे खास बात क्या है, जो हमारा ऑफलाइन सेशन रहने वाला है। जी। We are going to do certain amazing things, life transforming techniques, practical aspects. अभी we are just laying the foundation stone. अभी तो जस्ट आप समझिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे खेत में बीज बोते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? जमीन तैयार करते हैं। जमीन तैयार करते हैं। और मकान बनाने से पहले क्या करते हैं? नींव खोदते हैं सर। बस अब मान लीजिए ये जो ऑनलाइन है, ये वही है। जस्ट हम जमीन तैयार कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बना रहे हैं, ताकि ऊपर एक सुंदर घर का निर्माण हो सके, किया जा सके, है ना? तो मैं फिर एक बात शेयर करता हूं। अब देखिए, जैसे आप लोग कहीं कहीं पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ाता हूं, तो ये एफडीपी जो है ये एक अलग किस्म का एफडीपी है। जैसे राजीव जी ने कहा, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन कहाँ डिफिकल्ट है? जब तक हम खाली बुद्धि के स्तर पे रहते हैं।
when we come to the experiential level, everything becomes so simple, isn't it? Yes sir, बिल्कुल सर. देखिए सारी जर्नी किस बात की है? रियलाइजेशन की है सर. रियलाइजेशन की है. जब एक चीज आपके अनुभव में आ जाएगी तो उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको अपने आप समझ आने शुरू हो जाएंगे. अदरवाइज एक सवाल में से दूसरा सवाल निकलेगा, दूसरे में से 2 और निकलेंगे, उन 2 में से 3 निकलेंगे और क्या हो जाएगी? बम्बार्डमेंट. वही मैं कह रहा था कि अभी तो बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं. यस यस, अभी आपको झलक मिल गई होगी. यस सर, है ना? जी सर. और कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो? एनीबडी एल्स? रचना जी, सोनिया जी, भारती जी, अंजना जी, शैलजा जी, मैं उन्हीं के नाम लिख रहा हूं जो साक्षात मुझे दिखाई दे रहे हैं. ममता जी, हाँ ममता जी, कैसा रहा अनुभव आज के मेडिटेशन का? As usual, it was good, and with the every day it's getting better. Now we are just fully relaxed, like, and as per the sir said, like that we are also feeling lighter. Yeah. It's good. प्रिया जी? Sir, it was great experience. कल से बहुत अच्छा लग रहा है, आज बैक पेन फील नहीं हो रहा है. वेरी गुड. भारती जी? सर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कृष्ण जी का बना नहीं होता नीचे समुंदर, और उसकी लहरों में मैं तैर रही हूँ और मुझे उनके वो मोर पंख नजर आए और उनकी एक छवि नजर आई कृष्ण भगवान जी की. उसमें मतलब खोने वाला काम हो गया बिल्कुल ही डीप. मन कैसा है? बढ़िया सर. गुड. डॉक्टर अंजना? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बिल्कुल हल्का सा फील हुआ और एक कनेक्टिविटी सी हो गई थी, उसी में ही हो गए थे और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं था. गुड. रचना जी? बहुत अच्छा था. वही एक नींद की उसमें मैं चली जाती हूँ, ऐसा लगता है कि आसपास कुछ नहीं है. मुझे अलग ही कुछ एक्सपीरियंस लगता है सर ये. शैलजा जी? सर इट्स वेरी नाइस कि बहुत पीसफुल था और ऐसा लगता था सच में ही सो जाएंगे. जैसे रिलैक्सेबल होता है ना कि साइड में कुछ दिखाई नहीं देता, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड. इट्स टू मच. कोई हम मिलेंगे ना आमने सामने, फिर और बातें करेंगे इसके बारे में, है ना? चलो, बस सिर्फ आज ये सोचिएगा कि ये जो सब आपको अनुभव हुआ ये कहाँ से आया? कहीं बाहर से आया है, अंदर ही था? अंदर से ही सर. इसने कोई इंजेक्शन लगाया क्या? कोई टेबलेट खाई क्या? यस. बस वही जस्ट एक कनेक्शन जुड़ने की बात है. कोई आने वाले दिन, हाँ आने वाले दिनों में और हम इसके बारे में बात करेंगे, अनुभव करेंगे, है ना? अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन. वैसे मेडिटेशन के बाद सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं. इवन बोलने का मन भी नहीं करता, है ना? तो ब्लैंक होता है सब. कोई क्वेरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, शांत होता है सब. देखिए वही स्थिति पाने के लिए पहले लोग क्या करते थे? जंगल में, पहाड़ में, यहाँ जा वहां जा, पता नहीं कितने तप करने पड़ते थे, तब जाकर के इस चीज की एक झलक मिलती थी. अब ये चीज चल के आपके घर आ गई है, एट योर डोर स्टेप. हाँ के ना? यस सर. हाँ. So that way you are very lucky. So well, so I think we should end today's session. If you do not have any question, today again one homework. रात को सोने से पहले उज्जयी सांस लेंगे 8-10 और कल क्या करेंगे? उठ करके 3 स्टेज प्राणायाम करेंगे, खुद से भर्सिका प्राणायाम करेंगे और उसके बाद 5-7 मिनट आंख बंद करके बस अपने साथ बैठेंगे. किसके साथ बैठना है? With self. खुद के साथ बस. और बैठ करके क्या करना है?
अपनी आती जाती सांस को मन की आंखों से देखना है. You have to just keep observing. और इस प्रण के साथ कि एक भी सांस को मिस नहीं करना. फिर देखिएगा क्या अनुभव होता है, क्या चमत्कार होता है. हम कल बात करेंगे इसके बारे में. Are you ready to take this challenge? Yes, sir. How many? अच्छा, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? इशारा करके बताओ. सर खुद के लिए. जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाती है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है. मैं जो भी कर रहा हूँ, अच्छा बुरा कम ज्यादा, किसके लिए कर रहा हूँ? खुद के लिए सर. एक ये सिर्फ एक ये वाक्य आपका पूरा जीवन बदल सकता है. आपको एक अलग तरीके की दुनिया में ले जाता है ना? यस सर. ठीक है, तो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट. कल फिर मिलेंगे.